hydrates of non-metals. फोर्थ ग्रुप का CH4, SiH4, then carbon silicon germanium, GeH4, stannum, SnH4, PbH4. फिफ्थ ग्रुप का NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3. H2O, H2S, H2Se, H2Te, and seventh group, they are not called hydrides, they are called hydra acids. Hydra acids. HF, HCl, HBr, HA. Why are they not hydrates? And why are these hydrates? IDE means negative है ना? In none of the compounds hydrogen is negative there. At least here in these three cases negative. These three negative. These three negative. Last three में hydrogen negative H minus. There in none of the compounds hydrogen is negative. Therefore, strictly speaking, they cannot be called hydride. They are called hydra acids. Acids that contain hydrogen only. The other one is oxo acids, hydrogen and oxygen. IUPAC recommendation, कोई काम नहीं ना बेवकूफ लोगों को, हाइड्रेट्स को AN बोलने के लिए बोलते. ठीक है, BH3 को बोरेन बोलेंगे और B2H6 को डाइबोरेन बोलेंगे. मीथेन, सिलेन, जर्मेन, स्टेनेन, प्लम्बेन, यहां तक ठीक है. दिस आर ऑल एन्स. लेकिन अमोनिया को नाइट्रेन बोल रहा, रिकमेंडेशन अमोनिया को नाइट्रेन और H2O को ऑक्सीजन. द कंपाउंड विच इज पॉपुलरली नोन एज वाटर, they want you to call it as oxygen and spoil your life. ठीक है ना? We don't. Make a note. Huh? PH3 phosphane. Phosphane. Is the mic on? Phosphane, phosphine, phosphine. पुराना नाम INE लिखते थे हम. Phosphine चलेगा, phosphine चलेगा, pronunciation कुछ भी हो. Now it is phosphane. Arsane, stibane, bismuthine, with a question mark, which has a transient existence, doubtful existence. है नहीं है किसी को नहीं मालूम. ओके. फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ नॉन मेटल्स. Of course, there is another what is that classification also in class 11. Hydrates are classified as saline hydrates. Saline means salt like calcium hydrate, sodium hydrate, covalent hydrates, molecular hydrates.
बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिया है. Molecular hydrates. We don't require that. Stability of hydrates of non-metals is inversely proportional to their size. Small atoms form stronger bonds. Smaller the size, greater will be the overlap. Smaller the size, greater will be the overlap, stronger is the bond, and more stable is the molecule. That is the nursery rhyme. Smaller the size, greater the overlap, stronger is the molecule, stronger is the bond, and more stable is the molecule. Now, therefore, stability of, what do you mean by stability? Not dissociating into components. HF will never give you hydrogen and fluorine. Jitna bhi heat karo, even at 1100 I think that is stable. Stability of HF greater than HCl greater than HBr greater than HI. Similarly, methane is more stable than silane. Germane, stannane. You know why stannane is prepared? Stannane is prepared as, what do you call, a carrier of hydrogen, a vessel for hydrogen. Hydrogen is a gas, hai na? Tanks and tanks of gas cannot be taken. Therefore, it is made to adsorb on stannum. Stannum surface के ऊपर adsorb करते हैं solid. जब चाहिए heat किया तो hydrogen वापस आएगा. So that is stability. Next, बाकी भी लिखो NH3 greater than PH3. इसीलिए BiH3 को मैंने transient existence बोला. Second point, reducing ability of hydrates of non-metals. Is inversely proportional to their stability. स्टेबल है तो हीट करने से हाइड्रोजन नहीं आएगा ना. अगर अनस्टेबल रहा तो हाइड्रोजन हीट करने से हाइड्रोजन एटम आएगा. डिफाइन ए रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. डिफाइन ए रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. डोंट टेल मी वन हु गिव्स इलेक्ट्रॉन्स. In this context, one who gives, very good, hydrogen atoms on heating. Hydrogen atom is the word. Hydrogen atoms on heating. Therefore, methane less than silane, like that. H2O is not a better reducing agent, but you know H2S is. HF, HCl, HBr, HI. Red phosphorus plus HI at 250 degrees centigrade is the most powerful reducing agent. As far as organic reactions are concerned, क्या करेंगे? ग्लूकोज के ऊपर डाला तो क्या आता है? ग्लूकोज N हेक्सेन आता है. ऑल ऑक्सीजन्स आउट. All oxygens out.
and all hydrogens in, fully hydrogenate हो जाता है. Glucose C6H12O6 becomes C6H14. Red phosphorus HI. Third point, third one is the most important. Basicity of hydrates of group 5A. Why? Fourth group are no bases, sixth group are once again no bases. Seventh group are acids. They are not even hydrates. Now, NH3, PH3, ASH3, SBH3, which is most basic? NH3 is more basic. The reason 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन में आंसर है. There are so many, there are so many arguments. बोलते हैं नाइट्रोजन छोटा है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है. फास्फोरस बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी कम है. लाइक छोटा सिर के ऊपर इतना तेल लगा तो शाइनिंग ज्यादा होता है. ऐसा बोलते. लेकिन आईआईटी वालों ने ऑल द मिथ्स को डिस्पेल किया. लोग ये भी बोलते थे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाइड्रोजन से खींच लेगा, खींच करके ज्यादा डोनेट कर पाएगा. नो, none of it is true. Nitrogen, the lone pair is present in a directional sp3 hybrid orbital. The lone pair नाइट्रोजन लोन पेयर को कैसे ऑफर करेगा? वांट ए लोन पेयर, टेक इट करके सामने से ऑफर करेगा. फास्फोरस क्या करेगा? लोन पेयर चाहिए, ले लो, हाइड एंड सीक, ऐसे घुमा घुमा के देगा. इन फास्फोरस द लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन, is present in a non-directional s orbital. Directional sp3 hybrid orbital. I think NCERT also this is mentioned. Directional sp3 hybrid orbital, non-directional s orbital. Spherical है ना? S orbital has no direction. Now, what does this tell you? PH3 and H2S are the only two molecules without hybridization.
pH3 और आगे का ASH3। फास्फोरस को जो बोला आर्सेनिक एंटीमनी को सही है। सल्फर का जो होता है सेलेनियम टेलुरियम वही करता है। Therefore, the bond angle is 91 degrees. H2S में bond angle 91. Why? There is no hybridization and bond pair repulsion. 91, strictly 90 नहीं है, 91 because of bond pair repulsion. Lone pairs are revolving around the nucleus. They won't disturb the bond pairs. The only disturbance is there between bond pair and bond pair. फिर NH3 में क्यों है हाइब्रिडाइजेशन, PH3 में क्यों नहीं है? हाइड्रोजन कैनॉट क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस, वो ताकत नहीं है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचने का। वेयर एज नाइट्रोजन में कैसे होता, नाइट्रोजन बीइंग स्मॉल एटम, हाइड्रोजन गोज क्लोज टू इट ना, पास में जाके अपनी तरफ खींचेगा। नाउ third point is over. What about the shape 2004, no 2006, NCH3 thrice, hybridization and shape, NSIH3 thrice, hybridization and shape बता। क्या बोला? गुड, नो दैट्स नॉट बैक बॉन्डिंग। ये देखो नाइट्रोजन बीच में रहेगा, 3 मिथाइल ग्रुप्स ऐसा एक प्लेन में रह सकते थे ऐसा, लेकिन लोन पेयर क्या किया, इसको डराया तो भाग के चले गए। मिथाइल ग्रुप्स रैन अवे। NCH3 thrice is pyramidal. NCH3 thrice हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे sp3 है, दोनों का sp3 है। हियर डोंट टेल मी टर्मिनल एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन, ये टर्मिनल एटम नहीं है, ये भी सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन एंड कार्बन बोथ आर सेंट्रल एटम्स, सो sp3 silicon, this is pyramidal, 3 bond pair 1 lone pair। यहां क्या होता है, यहां लोन पेयर आएगा सिलिकॉन को काटने, सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन इसको कैच करेगा। कोई मेरे चेहरे के ऊपर गेंद फेंका तो मैं भाग जाऊंगा, अगर यदि तेंदुलकर की मुंह पर फेंका तो कैच करेगा, ठीक है ना। तो यहां सिलिकॉन के पास क्या है, खाली बोरी है, बैग है ना, जैसे लोन सांप आएगा बांध लेगा। इट इज टाइड, द लोन पेयर इज, दिस इज नॉट कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। व्हेन इज इट कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, अगर सिलिकॉन नाइट्रोजन को दिया तो उल्टा, हियर पेरेंट्स ओनली आर गिविंग मनी टू चिल्ड्रन। दिस इज कॉल्ड पी पाई डी पाई, सेंट्रल एटम से चालू करना है, पी पाई डी पाई, नॉट डी पाई बी पाई, बिकॉज नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल है ना। हाँ sorry, hybridization sp2, when nitrogen forms 3 bonds and 1 pi bond, नाइट्रोजन के लिए
sp3 है ना, एक p छोड़ दो, sp2 प्लेनर प्लेनर है इसीलिए sp2 नहीं, 3 बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर इसीलिए प्लेनर है। एक चीज बताना भूल गए, देखो, द शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल। एनसीईआरटी में इतना क्लियरली दिया हुआ। शेप में क्या लेते हैं हम? ओनली न्यूक्लियाई आर कंसिडर्ड, ओनली न्यूक्लियाई आर कंसिडर्ड। रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द न्यूक्लियस, नाइट्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, only nuclei are considered. But the arrangement of electron pairs in ammonia is arrangement of electron pairs in ammonia is electron pairs में क्या आएगा? both bond pairs and lone pairs आएंगे ना। electron pair बोला तो both bond pair and lone pair is tetrahedral। तो क्लियरली दिया, दो कॉलम बना के टेबलर फॉर्म बनाया, दो कॉलम किया, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, शेप, दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नहीं, जिसमें पाई बॉन्ड है वो यूज नहीं कर सकते ना। पाई बॉन्ड के लिए पी ऑर्बिटल छोड़ो। Next, the most important concept, which will roughly take half an hour towards the end of this class. Boiling point of hydrates, boiling points of all substances. I am not going to discuss just now. Before I start this, let me teach you the nature of chemical bond. How are the electrons distributed in a molecule of chlorine? ठीक है ना? Look at my hand movement. Electrons are moving with uniform velocity. Uniform. 50% of the time here, 50% of the time here. Like you are spending 12 hours at home, 12 hours outside home, class में. Means साल में 6 महीना, घर में 6 महीना बाहर. उसके बाद HCl देखो, this is called equal distribution of electrons. Equal distribution in terms of what? In terms of time. This is called non-polar. Non-polar. HCl में कैसे होगा?
नाउ अभी देखो, ऑब्जर्व माय मूवमेंट ऑफ माय हैंड. Means electrons are spending more time around chlorine nucleus. क्यों? Very good. Greater attraction, greater pull. यहाँ देखो, यहाँ दो घर है, दोनों घर वाले दो वॉचमैन को रखा है एंड दे आर सपोज टू मूव लाइक दिस. लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, अपना सेलर में एक टीवी रख दिया और एक थर्मो में चाय रखा. तो ये वॉचमैन लोग क्या करते हैं, कभी भी देखो टीवी देख के इधर ही बैठते हैं. 420 है ना, ये सोच के, क्या सोच के किया होगा वॉचमैन लोगों की, ज्यादा टाइम मेरे घर में रखूं. नाउ सो हियर हाइड्रोजन 40%, chlorine 60%, let us say. When you go to the IIT, 6 महीने घर में रहेंगे, क्या है, 4 months of holidays, 8 months of college. Now, this is called unequal distribution. Unequal distribution of electrons, and this is called polarity. What do you mean by polarity? Both charges within the same molecule. देखो, Na प्लस बोला तो Na प्लस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है. ये देखो, ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, सिर्फ पॉजिटिव. आई ऑलवेज डार्कन पॉजिटिव चार्ज. I compare positive charge with darkness. The darkness in the tube light is nothing but a collection of protons. Thank you. इधर से आओगे. ठीक है ना? Is this polar? You have only positive charge here. एक मिनट. हाँ, बैठ बेकरार करके हमें यूं न जाइए, यार सुबह को मैंने चाय पिया, पैसे नहीं दिया लगता है, ऐसे ही भूल के. So, Na plus this is not polar because you have only positive charge. Cl minus, you only have a negative charge. That blackness at the electrodes is nothing but positive charge. As the darkness increases, what happens? Fuse off. The tube light will spoil. Why? As the positive charge is increasing, electrons are not allowed to travel to the cathode. When electrons are going to the cathode, what are they doing from anode? When they are going, they fall on the tube. The lining of the tube is made of fluorescent material. This is barium sulfate, I think. Barium platinocyanide was used once but no longer used. Costly है ना, barium platinocyanide. Zinc sulfate use किया तो green light आता है. Fluorescent substances. What are fluorescent substances? Who use others light. दूसरों का light लेके shine होने वाला है ना. फ्लोरेसेंट. फ्लोरेसेंट का ऑपोजिट क्या है? फ्लोरेसेंट का ऑपोजिट इनकैंडिसेंट. इनकैंडिसेंट जो अपने आप जलने वाला, थर्मोयोनिक एमिशन, दोज एडिसन्स बल्ब्स. नाउ सो इफ ए सब्सटेंस कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दोनों रहा तो दिस इज कॉल्ड पोलर. पॉजिटिव भी रहना है, नेगेटिव भी रहना है.
एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस रहना। एक आदमी कभी इस पार्टी के साथ जा रहा था, इस पार्टी के पास जाने बाद ये चेहरा पहन के जाता है, उस पार्टी के पास जाते ये चेहरा बदलता है। He has the ability, chameleon. Now, what about HF? HF में मूवमेंट कैसे होगा? तीन चार डॉट, highly unequal distribution of electrons, highly polar, है ना? यह 30%, यह 70%. Electrons are spending most of the time around fluorine nucleus. It's like when you take up a नौकरी लिया तो 4 महीने घर में बैठ सकते हैं क्या? 4 महीने बैठने तो बोलेंगे पूरा 12 महीने बैठो। साल में 1 महीना छुट्टी, 11 महीना ऑफिस, ऐसा रहता है। This is called highly polar, and when can you use the word highly polar? Only when you see FH only, कोई दूसरा नहीं है। FH, OH, NH bonds only highly polar. Only these three are highly polar compounds. You can call a compound highly polar if only any of these three bonds is present. What about NaCl? What about NaCl? What about NaCl? Non-polar. Electrons? पूरा 100%. सुनो, यहां when you go abroad and become an NRI, ग्रीन कार्ड येलो कार्ड लिया तो क्या तू उधर ही रहेगा लाइफ लॉन्ग? कभी घर लौट के नहीं आओगे? कभी 3 साल में 3 दिन के लिए आके जाएंगे। दिस इज वेरी हाईली पोलर, and this very highly polar covalent bond is called ionic bond. Very highly polar covalent bond. So दुनिया में 2 ही varieties of bonds है. What are they? Only 2 varieties of bonds are there. Chemical bond is of 2 types. क्या है वो? Metallic bond and covalent bond. Metallic and covalent. And covalent bond are 4 varieties. What are they? Non-polar, less polar, polar, less polar, highly polar, very highly polar. And this very highly polar covalent bond is called ionic. All others are covalent. याद रखना. So very highly unequal distribution of electrons, very highly polar. यहाँ 10% of the time, यहाँ 90% of the time यहाँ. Dative bond is also a covalent bond. Sorry? बताऊंगा ना.
Very highly polar is called पूरा है ना, बोले रे पप्पू Now, boiling point, critical temperature, ease of absorption, ease of liquefaction, van der Waals constant A, real behavior, compressibility, how well you can compress. All these are dependent on, all of these depend on intermolecular forces. All these depend on intermolecular forces. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने वेराइटीज का है? Intermolecular forces are metallic attractions, intermolecular force of attraction, metallic attractions. Where do you find them? You find them in metals. Then electrostatic attractions. No, very highly polar attractions, because all are electrostatic forces only. All attractions are electrostatic only, na? Chemistry mein. In chemistry, any energy is due to electrostatic force of attraction. Now, metallic attractions, then very highly polar attractions, where do you find these very highly polar attractions? Ionic compounds. You will find them in ionic compounds. How do you know which is an ionic, which is covalent? No metal, no ionic. No metal, no ionic. Yes metal? I don't know. Metal रहा तो क्या है नहीं मालूम. AgCl ionic है, covalent है? बोलो. No. AgCl is more covalent than AgF and more ionic than AgBr. AgBr से आयनिक ज्यादा है, AgF से आयनिक कम है. लेकिन मैं ये कह नहीं सकता है कि कोवलेंट है, आयनिक है. You cannot brand. You cannot identify ionic bond, but we definitely can identify covalent bond. कैसे? No metal, no ionic. HCl मेटल नहीं है सर, आयनिक नहीं, तो कोवलेंट है. थर्ड वेराइटी, हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा? FH, OH, NH only. These are called highly polar attractions. Highly polar attractions. Where do you see them? Hydrogen bonded compounds. What is the difference between hydrogen bond and other bonds? All other bonds are between two atoms, but hydrogen bond is between two molecules. दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर. ऑल अदर्स आर इंट्रामॉलिक्यूलर. HF, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. यहां माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा
ये पोलैरिटी की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होता है। किन दोनों के बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। एंड दे आर कॉल्ड, वेयर डू यू फाइंड देम? एसोसिएटेड कंपाउंड्स। एंड हाईली पोलर अट्रैक्शंस हो गया ना। लास्ट वेराइटी लेस पोलर नॉन पोलर, लेस पोलर नॉन पोलर, ठीक है ना। एंड दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या बोलते हैं? लेस पोलर नॉन पोलर के बीच में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, वैन डर वाल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल, एंड वैन डर वाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, why do they all depend on intermolecular forces? What do you mean by boiling? देखो, take a water molecule and boil it. एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या बॉइल करेंगे? What do you mean by boiling कार्बन डाइऑक्साइड? सर कार्बन डाइऑक्साइड खुद गैस है, इसको क्या बॉइल करेगा? What do you mean by boiling कार्बन डाइऑक्साइड? लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग? लिक्विड को गैस बनाना। तो मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड डिसोसिएशन? सॉरी, हाँ, यस ऑफ कोर्स। इधर देखो, ये दीवार है, ये तो ईंट है। सेपरेटिंग द ब्रिक्स, क्या करना है तुम्हें? ब्रिक्स को सेपरेट करना है तो क्या करना है? सीमेंट को तोड़ना है। यहां ये जो बीच में सीमेंट है ना, इसको तोड़ना। डेमोलिशिंग द वॉल, ब्रिक जितना भी स्ट्रांग हो, दीवार स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं। मैंने 100 ब्रिक्स लाया, आयरन स्ट्रांग है, एज स्ट्रांग एज आयरन, उसको 7th फ्लोर में खड़ा कर दिया। खड़ा करके उसके ऊपर स्टेल इसलिए ऐसे खड़ा हो गया, सीमेंट लगाना भूल गए, सीधा ग्राउंड फ्लोर। ब्रिक्स आर वेरी स्ट्रांग, बट सीमेंट नहीं है ना। सो द स्ट्रेंथ ऑफ ए वॉल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, क्वालिटी ऑफ द सीमेंट, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड बिटवीन, ठीक है ना, वॉट एवर बॉन्ड इज देयर। सो बॉइलिंग and dissociation are different. Boiling means separating the bricks. Dissociation means destroying the wall, demolishing the wall, bulldozing the wall. Now, देख, so boiling point, critical temperature. What is critical temperature? गैस को लिक्विफाई करने का 2 तरीके हैं। क्या है वो? प्रेशर डालो या तो कूलिंग करो, कूल करो। एक हाथ से इसको गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, हीट किया तो इसको टेम्परेचर बढ़ रहा है, 400 डिग्री हो गया। फिर भी इसको प्रेशर डाल के हम कूल कर सकते, लिक्विड कर सकते। लेकिन एक टेम्परेचर के ऊपर जितना भी कोशिश करेंगे, जितना भी प्रेशर डालेंगे, वी कैन नॉट लिक्विफाई। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको तंग किया, इसको गुस्सा आया, मैंने बोला सॉरी प्लीज, हो गया,
ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार तंग किया। एक टाइम आया इतना तंग हुआ कि जितना भी कोशिश करेंगे मीन्स व्हाट इज द पॉइंट ही हैज रीच्ड, क्रिटिकल पॉइंट पहुंच गया। ही विल नॉट गेट कूल्ड कम व्हाट में, ठीक है ना। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied however much pressure we may apply. The temperature above which, उसके ऊपर जितना भी कोशिश करेंगे, जितना भी, I think the critical temperature of water is 432. मालूम नहीं, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हाँ, सो इतना गुस्सा आने के बाद भी वापस क्यों आया? अट्रैक्शन ज्यादा है। घर के लोगों पे गुस्सा है तो 4 दिन बात करना बंद करेंगे, लेकिन 5वें दिन से दोबारा मिलजुल कर जी। अट्रैक्शन ज्यादा है तो जितना भी झगड़ा हो जाएगा बाद में मिलेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन में 2 चीज है, अट्रैक्टिंग एंड गैदरिंग ऑन द सरफेस। अट्रैक्ट करना है, गैदर करना है। गैदरिंग, अट्रैक्ट करने में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, मॉलिक्यूल्स अपने आप आ जाते। आने के बाद वहां टिकना है। टिकने के लिए क्या रहना है? मॉलिक्यूल्स इधर आ गया, आ तो गया। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहा तो ये सब इकट्ठा होके उधर ही रहेंगे, ठीक है ना। एक मूवी रिलीज हुआ तो ऑडियंस जाएंगी, लेकिन जाने के बाद थिएटर में कितना देर टिकेंगे वो मालूम नहीं। फिल्म अच्छा लगा तो रहेंगे, या तो इंटरवल में ही भाग के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो एक जगह में कुछ 10 लोग आए डिफरेंट प्लेसेस से आए। आने के बाद सब दोस्त हो गए, मतलब सब दोस्त थे पहले से ही। सो दे विल नॉट लीव दैट प्लेस, दे हैव कम देयर एक्सीडेंटली, बट दे आर स्टेइंग देयर, दे आर रिटेनिंग देयर एट द सरफेस बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। उन दोनों के, उन सबके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विफैक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विफैक्शन? गैस को लिक्विड बनाना। गैस को लिक्विड बनाने में क्या लगता है? ये गैस है, ये देखो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। गैस को लिक्विड बनाना मतलब मॉलिक्यूल्स को पास में लाना। पास में लाने के लिए उनको आना चाहिए ना, आने के लिए उन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होना है ना, दैट्स इट। एंड व्हाट अबाउट दिस वैन डेर वाल्स कांस्टेंट? ये व्हाट अबाउट दिस रियल बिहेवियर? हाँ, ये देखो, आइडियल वर्सेस रियल। रियल gases. What is an ideal gas? Which obeys gas laws somewhat में? किसी ने बताया, किसी एक टीचर ने बताया, फेवरेट टीचर स्टूडेंट का, हर रोज 8 बजे को आना है, कभी लूट, अब स्कूल को कभी छुट्टी नहीं मारना। तो अच्छा बच्चा क्या करेगा? फॉलो करेगा। लेकिन 106 फीवर है और शहर में बाढ़ है, 250 किलोमीटर हरिकेन है, 250 किलोमीटर विंड, ये एम्बुलेंस में सलाइन लगवा के मैं स्कूल जाता हूं करके कोई बोलेगा क्या? ऐसा कोई किया तो उसको बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट। लेकिन नो स्टूडेंट इज आइडियल। ऐसा कहा होता है? फिल्मों में होता है। रियल गैसेस, ऑल अदर्स क्या करेंगे? दे एक्ट अकॉर्डिंग टू रियलिटी, क्लोज टू रियलिटी, रियल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलते हैं। तो why are ideal gases not real gases? आइडियल गैस रियल क्यों नहीं होते? ये KTG है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
उसमें ये बताया गया कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है गैसेस में। वो सही है क्या? सही नहीं है। अंडर सम कंडीशन सही है, वॉल्यूम ज्यादा रहा तो सही है। सो ये प्रेशर करेक्शन के लिए डाला हुआ वैन डर वाल का रियल बिहेवियर है सब। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा रहा तो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहा तो आइडियल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे जैसे डेवलप होगा वो रियल गैसेस हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कॉमन। हाँ, अब बता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 7 पॉइंट सेम, helium, neon. Which of the following can be liquefied easily? Hydrogen 2, methane 16, ammonia 17, molecular weights दे रहा हूं, CO2 44. Which of the following can be liquefied easily? Which of the following can be? Molecular weight उसका ज्यादा है, हाँ? लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कब देखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट कब देखते हैं? मेटालिक नहीं है तो, आयनिक नहीं है तो, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो वैन डर वाल देखते, ठीक है ना? तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, सो अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड इजीली। फिजिक्स का क्वेश्चन है। नाउ किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा? सब वो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सेनॉन, है ना? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हीलियम, हीलियम के बीच में क्या है? मेटालिक अट्रैक्शन है क्या? हीलियम क्या मेटल है? हीलियम क्या आयनिक कंपाउंड है? कंपाउंड ही नहीं है। हीलियम हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट ओनली बिटवीन हाईली पोलर कंपाउंड्स, हाईली पोलर कंपाउंड्स। तो यह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोले तो वैन डर वाल आता है मैं हूं ना करके, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वैन डर वाल। एंड वैन डर वाल अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, therefore helium less than, neon less than, and so intermolecular forces, वैन डर वाल में क्या आता है? डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शंस, आयन डाइपोल इंटरैक्शंस। आयन डाइपोल इंटरैक्शंस का है? आयन डाइपोल हाइड्रेशन, Na प्लस है ना, H2O, इसको ये कौन है? ये डाइपोल है, दो पोल वाला, ये आयन है, आयन डाइपोल। HCl, HCl के बीच में क्या है? डाइपोल, 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, कुछ भी हो, दे आर ऑल द नेम लंदन फोर्सेस केम बिकॉज साइंटिस्ट नेम वाज लंदन, ए जर्मन केमिस्ट। ठीक है, जर्मन केमिस्ट, तुम्हारा बोर्ड की किताब में है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल अट्रैक्शन। कब की बात है? वैन डर वाल फोर्सेस इन द case of less polar and non-polar, लेस पोलर नॉन पोलर में वैन डर वाल के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ हाईली पोलर में हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी हाईली पोलर में आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। They depend on, and any energy as you know is directly proportional to charge inversely proportional to size. And उस क्वेश्चन को आंसर करना क्यों दिक्कत है? Somebody was asking me, सर अब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाएंगे क्या करके?
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, कभी नहीं गलती करूंगा। देखो NaCl KCl, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है कौन जानता है यार? साइज तो पोटेशियम का ज्यादा है, यूनिवर्सल साइज, लेकिन चार्ज पोटेशियम के ऊपर ज्यादा है। कैसे? ये +1 ये +1 नहीं है भाई, दोनों +1 नहीं है। ये +1 का ये +1 का मीनिंग अलग है। मैं 2 इडली खाता हूं, होटल लिथियम वाला छोटा छोटा इडली बनाते हैं इतना, होटल लिथियम, वो तो 2 खाना है। होटल सोडियम रीजनेबल साइज है ना। देखो डोसा, इतना छोटा डोसा बनाए तो मिनी उत्तपम 2 खाना है, 2। होटल लिथियम का, होटल सोडियम का रीजनेबल साइज है, एक ही बस। होटल पोटेशियम वाला फैमिली डोसा, 2 लोग खा सकते। Therefore, lithium forms oxide Li2O, sodium forms peroxide Na2O to 1:1 ratio, 1 sodium 1 dosa. Potassium forms superoxide. पोटेशियम जो डोसा बनाएगा 2 ऑक्सीजन खाएंगे, हजम करेंगे। एक ही खाए तो हजम नहीं होगा। K2O बिल्कुल हजम नहीं है, 2 डोसा खाए तो गोविंदा गोविंदा बालाजी, ठीक है ना। देयरफॉर पोटेशियम ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करता है। ज्यादा चार्ज मीन्स बॉडी में ज्यादा चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन तो दे रहे ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड टीचर? इनएक्सपीरियंस्ड टीचर छोटा बच्चा पढ़ा रहा तो इधर जाएगा, बाउंस होके वापस आएगा। बाउंसर मीन्स इलेक्ट्रॉन उधर गया वापस आया, गया आया गया आया। व्हाट इज दैट? कोवेलेंसी। एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा है तो एसिमिलेट हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। सो 100 क्वेश्चंस पढ़ाया, उसमें कितना तुमको आया दैट इज इंपॉर्टेंट ना। सो कितनी देर तक रुका देगा इलेक्ट्रॉन? सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया 30% अपने पास ही रखेगा, 70% ही। पोटेशियम क्लोराइड 10 है, हाँ 90% समझ में आएगा क्लोरीन को। कॉन्सेप्ट समझ में आया या तो बाउंस हो गया, ठीक है ना। सो द क्वांटम ऑफ चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड इज मोर फॉर पोटेशियम, देयरफॉर वी कैन नॉट कंपेयर, वेरी डेंजरस थिंग। एंड दूसरा चीज सॉल्युबिलिटी भी। सॉल्युबिलिटी क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। What is lattice energy? Required energy. What is hydration energy? Possessed energy. देखो मैं 12 लाख का गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मेरा सेविंग्स में 10 लाख है, खरीद नहीं पाऊंगा। हाँ EMI ले सकता, बात अलग है, ठीक है ना। इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने सोचा अगले साल मेरा इनकम बढ़ेगा ना, अगले साल खरीदूंगा। अगले साल मेरा इनकम बढ़ गया 12 लाख, गाड़ी बन गया 14 लाख, फिर वही हाल। ऐसा देख देख के मैंने 1987 से 2005 तक वेट करके 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 जिस घर को 1 लाख में खरीदना है 18 लाख में खरीदा। अगले साल पोस्टपोन करके 18 साल में 18 लाख बढ़ गए उसका। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। सो हाँ, टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज इंक्रीजेस है, साइजेस इंक्रीज, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह। साइज इंक्रीज हुआ तो
लैटिस एनर्जी भी करता है, हाइड्रेशन एनर्जी भी करता है. बोथ एनर्जीज डिक्रीज. मेरा इनकम भी डाउन हो गया, कार का कास्ट भी डाउन हो गया. डिपेंड करता है कौन ज्यादा डाउन हो गया. मेरा इनकम 10 लाख से 9 लाख हो गया, गाड़ी का 12 लाख से एकदम 7 लाख हो गया. Then I can purchase. So solubility, don'ts में. And you know something? पूरा 34 years में एक बार पूछा गया, एक ही बार. Solubility. वो भी कैसे? Barium sulfate is not soluble, beryllium sulfate is soluble because the hydration energy of barium sulfate is less than something. In those terms दिया है. No. So, fluorine, chlorine, bromine, iodine. बोलो. Are they metals? So ऐसा चेक करना है. Metal, ionic, highly polar, van der Waals. Are they metals? No. Are they ionic compounds? Compounds भी नहीं है. Are they hydrogen bonded? No. Van der Waals. Mass. So top to bottom क्या होता है? First two are gases. Bromine is a liquid. Iodine is a solid. What does it tell you? What does it tell you? As you go down the group, intermolecular forces are increasing. Gas, more attraction, liquid, most attraction, solid. So in a group of non-metals, where do you find a gas? The first one, X, Y, Z, P, Q, R. Which of the following is a gas? Among them there is only one gas, X. In a group of metals, where you might find a liquid? In a group of metals, where might you find a liquid? Last में, क्योंकि metallic attraction weak होता है ना, zinc, cadmium, mercury. Metallic attraction also is directly proportional to charge, inversely proportional to size. Metallic attraction is once again electrostatic है ना, once again that depends on size. Everything depends on size. So in a group of non-metals, the only gas is at the top. In a group of metals, the only liquid is at the bottom. Now, so boiling points का order वही है, सब का order वही है. We will continue after the break at 2 o'clock. बंद करा.